Okay, so today we are going to start with okay. So uh, we are going to start today, February March 2021, paper 4-2. Let's start with question number 1. The most common oxidation state of cobalt are +2 and +3. Complete the electronic configuration of the following free ions. So if you look at cobalt, if I am not wrong, can anybody check and confirm me its atomic number is 27? Yes, sir. So it means it have a 27 electrons. So cobalt 2 positive have 25 electrons and cobalt 3 positive have 24 electrons. And you have to remember one more thing, that first electrons are removed from 4s and then 3d. So if I write the electronic configuration of cobalt, okay, if we talk about argon, here they have written Ar argon. And if you look at the periodic table, you will find argon have atomic number 18, right? So, and it is actually ending at 3p6. So after 3p6, we have 4s and then 3d. Okay, so if it's a cobalt 2 positive, till argon we have 18 electrons. Then as I have told you, it's 2 positive. So there are 25 electrons, so which means 4s have a 0 electron in it. And then I have a 3d. So D have a capacity of 10 electrons. And if you subtract 18 from 25, you are left with 7 electrons, so 3d7. So either you can write in this manner, or you can just write 3d7 and there is no need to write 4s. Is this understandable? Now, in cobalt 3 positive, there is one more electron is less. So either I will write 3d6 or I will write
4s0, 3d6. Is it clear to everyone? Yes. Okay, now part 2. Cobalt 2 positive ion and cobalt 3 positive both form complexes with EDTA 4 negative. Okay. Use the data in the table to predict what happens if anything when separate aqueous solution of cobalt 3 positive and cobalt EDTA complex are left to stand in the air. Okay, which element is present in the air? Yes, we know when we talk about air, what is there in the air? Air contains majorly nitrogen and then oxygen. And if we talk about nitrogen, it is normally unreactive in normal conditions, but oxygen is reactive. So it means that what they want to know that if we keep a cobalt 3 positive solution in air, then whether we keep cobalt 3 positive solution in air or cobalt EDTA complex solution in air, first thing you have to identify will reaction occur, and second thing that what will be the observation. Are these 2 points are clear to everyone? Yes. Yes, Okay. sir. Now, if you look at these equations for air, I can take this equation because here I have oxygen on the left hand side. And if oxygen is on the left hand side, so it will undergo a forward reaction, which means that it will undergo reduction. The oxygen reduces. ये point भी clear है सबको? जी अगर किसी को कोई confusion है इसमें तो पूछ लीजिए. अच्छा. Further, if it will undergo oxidation, then either cobalt 3 positive or cobalt EDTA negative must be oxidized. इन्हें क्या होना चाहिए? Oxidize होना चाहिए. ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? So सर हमने ऑक्सीजन वाली इक्वेशन क्यों चूज किया? ऑक्सीजन वाली इक्वेशन क्यों चूज की? आप जरा ये स्टेटमेंट पढ़ें. क्या कह रहे हैं कि हम दोनों कॉम्प्लेक्स दोनों सॉल्यूशंस को कहां पे प्लेस कर रहे हैं? ओ ठीक है सही. ठीक है, एयर में. और सो ऑन द राइट इन हाफ इक्वेशन. तो दो कंक्लूजन है. अगर रिएक्शन होगा तो कोबाल्ट या कोबाल्ट ईडीटीए, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन या कोबाल्ट ईडीटीए बोथ कैन बी ऑन द right side of the half equation. And the second important thing, for the reaction to take place, their E naught value must be lower than positive 1.23. Is this understandable to everyone? If anybody have any doubt, any confusion, kindly ask. जी ये क्लियर है सबको?
दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कौन सा वाला पार्ट? ये आपने ऑक्सीजन क्यों चूज किया है और रिडक्शन वाला पार्ट। Okay, just give me a minute. I am explaining again. Okay. Now, is my screen is shared? What they are saying, use the data in the table to predict what happens. So, if anything, when separate aqueous solutions of cobalt 3 positive and cobalt EDTA complex are left to stand in the air. So we know that air have a nitrogen and oxygen reacts when there is a reaction in air. So that's why I have chosen this equation, because this equation have oxygen in it, and oxygen as it is on the left hand side. So when this reaction occur and oxygen reacts, this reaction will undergo reduction. ये बात क्लियर है सबको? Yes, is this point is clear to everyone? Yes, sir. Okay, अगर किसी को कोई confusion हो तो please पूछिएगा. Okay, now अगर ये reduction कर रहा है, it means for the reaction to occur, they must have to oxidized. And for that, there must be two conditions in which they oxidize. First, they must be on the right hand side of the equation. These two, either cobalt 3 positive and cobalt ETTA. And the second thing, their E naught value must be lower than the E naught value of oxygen half equation, that is positive 1.3 volt. ये दोनों पॉइंट्स अब क्लियर हैं सबको? Yes, sir. Okay. So here is another important thing that what I observed. If we look for cobalt 3 positive, I have only this equation, right? For cobalt 3 positive, and cobalt 3 positive is also on the left hand side instead of being right hand side, and its value is greater. So it means when it will react with this half equation where I have chosen the oxygen,
it must undergo reduction. ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखें इस इक्वेशन में हमारे पास, जिसको मैंने एयर के लिए चूज किया है, वी हैव ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर. सो वी नो एयर आल्सो कंटेन वाटर वेपर्स, राइट? So there is a possibility that water vapors can also react. So the thing is that it means this here either reduction or oxidation may occur. If reduction, अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस हाफ इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, और अगर इस हाफ इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है तो वाटर रिएक्ट करेगा. इस अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर वाटर रिएक्ट कर रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा. ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अब अगर हम ऊपर कोबाल्ट वाला केस देखें, जहां पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसका मतलब है ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही करेगा ना, और इसकी वैल्यू ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब है जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो in this half equation reduction occur and in this half equation oxidation. ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सर एक और बार समझा देंगे प्लीज? अच्छा आप मुझे पहले ये बता इंडिकेट कर सकते हैं आपको क्या बात समझ में नहीं है? सर के हमने जो है इसको रिडक्शन में क्यों नहीं लिया, ऑक्सीडेशन में क्यों लिया है O2 वाला? चीज तो अभी ऑब्जर्व की, व्हाट आई इनिशियली इग्नोर्ड. अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में कितनी चीजें प्रेजेंट हैं? सही सर। जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है, ये बात क्लियर है? चलें अभी इस इक्वेशन को इग्नोर करें, अभी सिर्फ एयर वाली ऑक्सीजन की बात करते हैं, एयर वाली इक्वेशन की. इस इक्वेशन में हमारे पास ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, और ये दोनों ही एयर में भी होते हैं, इससे आप सब फेमिलियर हैं, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव 1.23 है. तो सिंपल सा इनिशियल हमारा कंक्लूजन ये है कि ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेगा तो रिडक्शन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वाटर में कन्वर्ट होगा. यस ये सर। बात आ रही है? यस। और जब वाटर रिएक्ट करेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वो ऑक्सीजन फॉर्म करेगा. ये बात भी क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रिडक्शन कर रहा है और कौन ऑक्सीडेशन, कब ऑक्सीडेशन होगी? रिडक्शन तब होगी जब जो सेकंड हाफ इक्वेशन है जिसको हम इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, हैव E नॉट ग्रेटर, सॉरी, E naught is smaller than positive 1.23 volt. तो तब यहाँ पे रिडक्शन, इस हाफ इक्वेशन में रिडक्शन होगी, यानी कि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा. ये बात क्लियर? यस सर। और सेकंड हाफ इक्वेशन में अगर सेकंड हाफ इक्वेशन की E naught वैल्यू ग्रेटर हो पॉजिटिव 1.23 वोल्ट से, तो इट मींस वो सेकंड हाफ इक्वेशन में रिडक्शन होगी, और यहाँ पे ये वाटर बैकवर्ड रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन बनाएगा और ऑक्सीडेशन होगी. ये बात क्लियर?
सर मतलब जब भी दो इक्वेशंस को कंपेयर किया जा रहा है तो जिसका ई नॉट ज्यादा होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा और जिसका ई नॉट कम होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, है ना? बिल्कुल सही। ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी दो हाफ इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, द हाफ इक्वेशन which have a greater E naught value will undergo reduction, and the half equation which have a smaller E naught value relatively will undergo oxidation. Is this point is clear? यस सर। यस। तो सर मतलब इसमें देख के करेंगे तो मतलब कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है H2O से, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। Cobalt 3 positive. जी 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 सर, सॉरी, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। बिल्कुल। Yes, सही। good. So when we keep cobalt 3 positive aqueous solution in the air, as its value is greater, so it will undergo preferably reduction, and from the air water interacts and water loses the electron and form oxygen. ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस सर। Okay, so here what we will write: cobalt 3 positive gains electron to form cobalt 2 positive, which is reduction, and gas evolve. ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, अब सेकंड उस पे आ जाए। कोबाल्ट EDTA complex, if you leave that in here, what will happen? So see, नो it, रिएक्शन। it is also on the left hand side, but its value is smaller, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। so there will be no reaction over here. ठीक है, there will be no reaction over here because it's on the left hand side. हाँ, अगर इस इक्वेशन में ये कोबाल्ट EDTA नेगेटिव कॉम्प्लेक्स राइट हैंड साइड पे होता तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता, यानी कि ये बैकवर्ड रिएक्ट करती और ये इक्वेशन में फॉरवर्ड रिएक्शन होता। बट in the current scenario, when we are using the cobalt -1 complex in the air, no reaction will occur and no changes seen, no changes observed. जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस। सर ये पार्ट 2 जरा दोबारा समझा दूं। पार्ट 2, अच्छा देखें, मुझे जो लगता है ना इसमें आप लोगों को क्या थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में समझें तो मैं वो बताना चाहता हूँ। देखें, आपके पास कोई भी हाफ इक्वेशन, जब वो हाफ इक्वेशन व्हेन वी आर यूजिंग द डेटा बुकलेट, okay, when you are taking any half equation from the data booklet, that half equation
is always in the form of this. मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ. इट मीन्स यहाँ पे इस पे जो भी चार्ज होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना चार्ज जो है इंक्रीज हो जाएगा. ये बात क्लियर है? So your forward reaction is always reduction and backward reaction is always oxidation. ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? जी. यस सर. ओके. सो इट मींस कि देखें, अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, इस इक्वेशन को फ्लिप करके भी दे देता है. तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फॉर अ हाफ इक्वेशन विद रेफरेंस टू डेटा बुकलेट. वो हाफ इक्वेशन जो आपको डेटा बुकलेट में दी हुई होती है, यानी कि जिसमें हमेशा उस हाफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिस हाफ इक्वेशन में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है? तो ऐसी हाफ इक्वेशन में species on left hand side undergoes reduction if its E naught value is greater than other. जिससे आप रिलेट कर रहे हैं उससे इसकी E naught वैल्यू ग्रेटर होगी, तो जो स्पीशी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो रिडक्शन करेगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. ये पॉइंट क्लियर? और अगर मैं इसी ऊपर वाली हाफ इक्वेशन को किसी और हाफ इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं और इस हाफ इक्वेशन की ई नॉट वैल्यू से स्मॉलर है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, द स्पीशी ऑन राइट हैंड साइड undergoes oxidation if E naught value is smaller than other. ये पॉइंट भी क्लियर हो गया जी? Are these 2 points are clear? Yes, sir. Okay. तो जो है ना सब इक्वेशंस में अप्लाई करते हैं. नाउ हैव अ लुक ओवर हियर. वी हैव here have these two things and its E naught value is positive 1.23. So अगर मैंने इसको प्लेस किया है एयर में, तो ये आपके पास देखें लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, हाफ इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे नहीं है. तो ये रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्ट किस तरह करेगा कि ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? बी. अगर कोबाल्ट EDTA नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस? ये कौन बता रहा है? सर वापस पूछिएगा, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कि अगर कोबाल्ट EDTA नेगेटिव आयन को आप एयर में रख रहे हैं
और आपके पास ये हाफ इक्वेशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली उसको रिड्यूस होना है या ऑक्सीडाइज होना चाहिए? कोबाल्ट को सर रिड्यूस होना चाहिए ना। कोबाल्ट EDTA कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस होना चाहिए, ये बात सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस तो क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। बट इस को हम रिलेट किस हाफ इक्वेशन से कर रहे हैं? ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन वाली से। अच्छा, जो चीज रिड्यूस होती है उसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होती है या स्मॉलर होती है? जी, ग्रेटर 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 होती है। तो अगर आप ऑक्सीजन वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो इसकी ई नॉट वैल्यू उससे क्या है? स्मॉलर। स्मॉलर है। तो स्मॉलर है तो इस वजह से इसे रिड्यूस होना तो चाहिए, बट ये उस हाफ इक्वेशन के साथ रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू उससे स्मॉलर है। तो इसका मतलब है कि इस केस में रिएक्शन ही नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको या अभी भी नहीं हुआ? Yes, is it clear now or not? Yes, sir. Fair. Okay, is smaller than not of oxygen and water. और यहाँ पे भी आप ये स्टेट कर दें कि as not of mobility positive is greater than cobalt. Point is clear to everyone? Yes. Now next part. Hydrated cobalt 2 nitrate, and here you have a formula, is a red solid. Okay. That behaves like hydrated magnesium nitrate when heated. Magnesium nitrate on heating क्या होता है? Hydrated है, तो first it will, on heating, water evaporate होगा और condense हो जाएगा वो water, and then decomposition होगी. Okay. Describe in detail what you would expect to observe when crystals of cobalt nitrate 6H2O are heated in a boiling tube gently at first and then more strongly. Okay. So, देखें दो केसेस हैं, पहले you have to heat it gently and then you have heated strongly. So I have a cobalt 2 nitrate hydrated solid when I do gentle heating. It remains as this and all the water of crystallization evaporates.
ये बात सबको समझ में आ गई? जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. This is the boiling tube, and here you have a solid. First, you heat it gently. What will happen? This water will evaporate, and what you will observe, you will going to observe a small droplets of water on the test tube only. Because whatever the water that escapes from here condenses when it reaches the mouth of the test tube, and as a result the small droplets of water is seen at the top of the test tube. ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? So if you read this point line again, describe in detail what you would expect to observe when crystals of cobalt nitrate 6H2O are heated in boiling tube gently. So I can write on gentle heating condensation सर इसमें ब्राउन गैस नहीं फॉर्म होगी? just wait for a minute. Brown gas will form, but right now I'm talking about gentle heating. I didn't heat it strongly. Okay, brown gas is formed when it gets decomposed. So I'm just talking about the first thing, that is the gentle heating. Okay, on mouth of tube or boiling tube. Point is clear. So what we did the gentle heating first. Now in the second stage, we heat it more strongly. So on strong heating, this solid decomposes to give you cobalt oxide, 2 moles of nitrogen dioxide, and half mole of oxygen if I make a balanced equation. Right? सर पहली वाली इक्वेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स साइन का कोई कलर चेंज वगैरह नहीं लिखना होगा? देखें, कलर चेंज बिल्कुल, अगर आपको जो है कोबाल्ट नाइट्रेट का याद हो तो आप लिख सकते हैं। हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट का हमने आपको रेड बता दिया, ठीक है? तो रेड टू कलरलेस जरूरी नहीं है कलरलेस हो सकता है कोबाल्ट नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट है तो कोई और कलर भी हो सकता है। ठीक है, सो ये तो आपका जेंटल हीटिंग पे हो गया। नाउ ऑन strong heating, as NO2 is formed, NO2 gas shows brown fumes. So on strong heating, brown fumes are observed. And because
solid turns into liquid. So actually what will happen if you see, it's a very small amount. So we heat it due to the strong heat. The brown gas is evolved as it decomposes. And for the time being that this solid looks like a melt in a melted state, but as it's cooled down, it again turns solid. Are these observations clear to everyone? Yes. If anyone have any question, kindly ask. Okay. सर आप ऑक्सीजन गैस का रिलीज होना नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, देखें 2 मार्क्स हैं, मैंने तो वैसे भी 1 पॉइंट आई हैव एडेड 1 मोर पॉइंट. So but how would you say about oxygen gas, because oxygen gas is colorless, right? So along with that colorless gas a brown gas is formed, so you cannot just. लेकिन आप वो स्प्लिंटिंग मेथड यूज कर सकते हैं. Yes, Identify. yes, that's what I am going to say. So along with brown fumes, you are not able to observe the colorless fumes, right? So for that, you can further write that the oxygen is also forms which uh, can be tested by glowing split, which relights. But see, it's of 2 marks, so I think 2 points are more than enough. Here I got the first point, and here I got the second point. So this is the additional point that I already wrote. ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीजन गैस का भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट वहां पे आप फिर कलरलेस फ्यूम्स मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि कलरलेस फ्यूम्स तो आपको दिखेंगे ही ड्यू टू द ब्राउन फ्यूम्स. तो आप सिर्फ उसका टेस्ट मेंशन करेंगे कि ऑक्सीजन गैस इज फॉर्मिंग which can be tested by using a glowing splint which rekindles or relight when in contact with oxygen. Is it clear? Yes. Any other question? Okay. Explain why the thermal stability of group 2 nitrates increases down the group. And it's of 2 marks. So you just need to write the 2 points. One is that down cationic radius sorry increases which result less polarization of nitrate ion. That's it. 2 marks. Is this clear? जी, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now, this is question number 2. Iron 2 compounds are generally only stable in neutral, non-oxidizing conditions. It is difficult to determine the lattice energy of FeO experimentally.
Use the data from data booklet and this Born-Haber cycle to calculate the lattice energy of FeO solid in kilojoules per mole. Okay. So if you look at this cycle, I have to find this thing. And I have not been provided with these values. So if you see that this is atomization of oxygen, this is first ionization energy of Fe, and this is second ionization energy of Fe. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Okay. So where it is? See, here you have a iron. First ionization energy is 762. Second ionization energy is 1560. So 762 and 1560. Then we need the atomization of oxygen, for which we have to go to the bond energy values. So if you see, when 1 mole of oxygen is atomized, 496 kilojoule per mole energy is released. But when it is broken down, I am going to get 2 moles of oxygen, right? So if I use the half mole of this, I will get 1 mole of oxygen. Then it must be divided by 2. So here I have 496 over 2. That is the atomization of oxygen. ये point यहाँ तक clear है सबको? Now, if you see the data booklet, starting from these elements, this is your direct route, and this whole thing is your indirect route. So direct route is always equals to indirect route, right? So my first expression will be minus 272 is equals to positive 416 positive 496 over 2 positive 762 positive 1560 then positive 141 and then positive 798 is then x. So can anybody find me the value of x and tell me the answer?
जी कोई मुझे सॉल्व करके, दो स्टूडेंट सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या आ रहे हैं। Sir, negative 3915. नेगेटिव 3915. 15 kilojoule per mole. Is this clear to everyone? Sir, why is the sign of X positive? The direction downwards, sir. Sorry. So like 798 plus X, like why is it plus X? Although direction is downwards. Yes, because see where it is ending, the x is starting from there over, right? And Yes. its direction is downward. See, here the direction is downward, so you are getting the answer in minus. Here the direction is downward, the value is negative. So see, you are getting the value in negative only. Downward direction is just indicating that the energy is released. Oh, right. Okay, so we are getting the negative 3915, which is showing that the energy is being released. जी यहां तक क्लियर है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Most naturally occurring samples of iron 2 oxide are found as the mineral wustite. Wustite has the formula of F20OX. It contains Fe2 positive and Fe3 positive ions. 90% of the ions present as Fe2 positive and 10% as Fe3 positive. Deduce the value of X. G. How could you able to find the value of X? Yes. Okay. We know that 90% is Fe2 positive and there are total 20 Fe. So it means what is the 90% of 20 Fe? It means out of these 20, 18 Fe2 positive, there are 18 Fe2 positive ions, right? And two Fe3 positive ions are there. ये बात सबको क्लियर है? Yes. जी अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो प्लीज पूछ लें.
तो Fe2 पॉजिटिव के साथ कितने ऑक्सीजन ऑक्साइड आयंस ज्वाइन हो सकते हैं? क्या रेशो होता है? 1:1. It means if there are 18 Fe2 positive, then there must be 18 ऑक्सीजन्स। ये बात क्लियर है सबको? जी देखें, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला FeO होता है, बट जब हम Fe3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, which is indicating that two Fe3 positive ion must have a 3 oxide ions. तो देखें, मुझे टोटल ऑक्सीजन का काउंट पता चल गया, देयर आर 18 and there must be 3. So value of X would be 18 plus 3, which is 21. So the value of X is 21. अगर ये पार्ट किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। फिर हम चार्ज यूज कर सकते हैं। जी हम चार्ज यूज कर सकते हैं like 18 times 2 and 2 times 3 because overall charge में 0 दिख रहा है उसका। हाँ, तो चार्ज की देखें, चार्ज से हम इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चार्ज यूज करना चाह रहे हैं ना चार्ज से, तो देखें Fe20OX is there, right? तो इट मीन्स कि जब मैं आयरन की बात करूंगा तो आयरन के 20 एटम्स हैं, ठीक है? उन 20 में से %90 वो हैं जिनका चार्ज क्या है? +2 है, ठीक है? प्लस 10% वो हैं जिनका चार्ज है +3। ये मैं परसेंट ले रहा हूँ तो इट मीन्स मुझे इसको डिवाइड बाय 100 करना होगा। माइनस, ये तो पॉजिटिव चार्जेस वाले आ गए। नेगेटिव चार्जेस वाले कौन से हैं? ऑक्सीजन है, और उसके पास कितने एक्स है मुझे नहीं पता। कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? तो मैं यहाँ पे -2 टाइम्स एक्स। सो अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको यही काउंट मिलेगा 21। आप करके देख लें। सो जी, कोई मुझे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल के बताए क्या आ रही है? आप इस तरह चार्ट से कर सकते हैं हम ना। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू आपको 21 ही मिलनी चाहिए। जी सर, 21 आ रही है। अदरवाइज आप इस तरह रेशो, जिस तरह मैंने यहाँ पे रेशो लिया, उस रेशो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन सर एक मिनट हाउ से ऊपर कर सोल्यूशन। जी हाउ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ Fe कंप्रेशन। ओके ठीक है सर, थैंक यू। थर्ड का आंसर मुझे कौन बता रहा है?
सर एफईओ की लेटेस्ट एनर्जी वो होगी, सीओ की ज्यादा होगी, एफईओ की कम होगी। क्यों? क्योंकि सर एफई का जो है वो आयनिक रेडियस जो है वो छोटा है सीए से। तो फिर अगर आयनिक रेडियस छोटा है तो Fe की चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। सर तो कैल्शियम का छोटा नहीं है ज्यादा आयरन से। बेटा पीरियोडिक टेबल देखें। पीरियोडिक टेबल में ये रहा पीरियड नंबर 4, जहाँ पे पहला आइटम है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है स्कैंडियम, चौथा है टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, देन आयरन एंड देन कोबाल्ट। तो आयरन ये रहा और कैल्शियम ये रहा, बट बोथ आर इन द सेम पीरियड। इट्स 20 एंड इट्स 26। तो अब बताइए किसका कैटायनिक रेडियस बड़ा छोटा होगा? कैल्शियम। क्यों कैल्शियम बेटा? आयरन का होगा ना, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हेंस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन लीड्स टू द स्मॉलर साइज, राइट? अक्रॉस द पीरियड तो हमेशा जो एटॉमिक रेडिया है या जो आयनिक रेडिया है सेम चार्ज वाले आयंस का, उनका डिक्रीज होता है क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं अक्रॉस द पीरियड। शेल थोड़ी चेंज हो रहा है, बट न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एड अप हो रहे हैं और जो है इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एड अप हो रहे हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? तो हम इस बेसिस पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि the cationic radii of FeO2 is smaller than calcium oxide. So the cationic radius of Fe2 is smaller than CaO. So stronger attraction cationic radius of Fe2 is smaller than CaO. तो attraction stronger होंगी तो bond क्या होगा? Stronger होगा। Hence the lattice energy FeO is more exothermic। तो ग्रेटर वैल्यू होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा मतलब सर रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उससे लेटेस्ट एनर्जी से। बिल्कुल, क्योंकि रेडियस जितना स्मॉलर होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी बेटा। जी सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। तो सर ये मोर एक्सोथर्मिक लिखना जरूरी है या फिर लिख सकते हैं कि एनर्जी विल बी ग्रेटर? नहीं तो फिर आप बोलेंगे लेटिस एनर्जी डिक्रीजेस क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ना। सही सही सही, ठीक है समझ गया। बट इस तरह लिखें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ओके थैंक्स। नाउ heating the FeO results in the formation of Fe3O4 shown।
Each formula unit of Fe3O4 contains Fe2 positive ion and Fe3 positive ions. How? So show how the reaction 1 can be described as a disproportionation reaction. Can anybody recall what is disproportionation reaction? A reaction in Yes, which the same species getting oxidized and reduced. Okay. And here, which is that same species? It's 0, Iron. iron. And more specifically, iron 3 ions. तो यहाँ पे ये एक जो आयरन है वो +2 से सो अगर आप यहाँ पे देखें तो Fe+2+ से Fe0 में जा रहा है, जिसका मतलब है आयरन 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो रहे हैं। और दूसरे केस में देखें तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में जा रहा है। ये वाला आयरन 3+ चार्ज एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है और सेम ही स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, तो इसीलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो हम स्टेट कैसे करेंगे? एक मिनट। सेम स्पीशी that is iron 2 positive is oxidized to Fe3 positive and आप यहाँ पे ऐड कर दें। सो Fe2 positive is both ये क्लियर है स्टेटमेंट सबको? Yes, sir. ओके। Fe3O4 can be electrolyzed using inert electrodes to form Fe. Okay. Write an half equation for the reaction that occurs at the anode. Anode means
सो एनोड पे कौन आएगा? एनाइन आएगा. एनाइन आर नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज आयन. सो this is a compound एक मिनट. तो यहाँ पे हाफ इक्वेशन कौन सी आएगी, क्योंकि सिर्फ ऑक्साइड आयन नहीं है. तो O2 माइनस sorry, it will become oxygen and 4 electrons. We have to put 2 over here. ये क्लियर है सबको? जी यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके. तो आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ. बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. ओके, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.